So, my lord, he had 6 more years to practice in the job and taking his full salary. आपको जजमेंट बताइए। कभी कभी पास ओवर कर तो दिया पास ओवर के लिए जूनियर आए ना, कभी मना नहीं करते, कभी पास ओवर के लिए मना ही नहीं है, सिर्फ फाइनल हियरिंग वाले दिन मना करते हैं। मेरा कहना, जब नौकरी ही आपकी 6 साल की बची थी, जी जी, तो 11 का क्या औचित्य है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सिर्फ वकील को अधिकार है 80 तक काम करने का। हाँ, और बाकी गवर्नमेंट उठा के बाहर कर देती है, क्या करें? जी, हम तो आज से 25 साल 30 साल बाद भी आपको यही वकालत करते बिल्कुल, हम तो चाहते हैं आप 100 साल तक वकालत करें। नहीं सर, 90 साल की उम्र में मैं वकालत रिटायरमेंट ले लेंगे आप? अच्छा, और सन्स 25 साल तो क्या हो गया? 28 साल, दे आर हेल्ड टू बी डिपेंडेंट। यू अंडरस्टैंड दैट लॉस ऑफ फादर इज अ ग्रेट लॉस। आप कहते कि आप 65 में रिटायरमेंट ले लेंगे तो बच्चे कितने खुश हो जाते कि इनको सारी इंश्योरेंस मिल जाएगी। I never climbed the stairs of the High Court slowly. दौड़ के ही चढ़ता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही दौड़ के चढ़ते रहे 92 तक। Lord, there is a delay. Lord, may kindly be condoned. I like to. हाँ, ठीक है, delay condoned. My lord, the point in this case is that the deceased Purushottam was 54-year-old, and my lord, he was working in NCL, SECL, and lord, he had only 6 more years to para 62 में है, Para 62 years. para 62. Yes. हाँ, आवेदक साक्षी प्रवीण कुमार झा अपनी साक्ष्य में कथन किया कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड दीपका परियोजना एरिया दिसवांसो में क्लर्क गेट 2 के पद पर पदस्थ थे। इस साक्षी के अनुसार स्वाइंसो ये पद पे इतना थे ये वो। So my lord, he had 6 more years to practice in the job and taking his full salary and then adding 15% against future prospects. The compensation has been calculated, which is wrong. My contention is that all these things apply when there is more than 11 years of service left. आपको जजमेंट बताइए। नहीं है, ढूंढूंगा आप पर। ढूंढने का टाइम ही कहाँ मिलेगा, अभी तो ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, वैसे मेरा एक निवेदन है सर, हम लोग वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द हार्ड वर्किंग नेचर ऑफ माय लॉर्ड, अरे इसके सब पर मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग को 10 अदालतों में दौड़ना पड़ता था, तो कभी कभी पास ओवर कर तो दिया। पास ओवर के लिए जूनियर आए ना, कभी मना नहीं करते जी, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, कभी मना नहीं करते सैटरडे, कभी पास ओवर के लिए मना ही नहीं है, सिर्फ फाइनल हियरिंग वाले दिन मना करते हैं। जी सर। लेकिन जूनियर को इतनी जहमत उठानी पड़ेगी कि वो आ जाए, थोड़ा सा आके बोल दे पास ओवर कर दीजिए। तो ये मेरा 6 साल बचे थे रिटायरमेंट के और मल्टीप्लायर 11। दूसरी बात, अडल्ट सन्स आर ऑल्सो रॉन्गली हेल्ड टू बी डिपेंडेंट्स। चलिए, उसके बारे में भी लॉ सेटल्ड है, तो मल्टीप्लायर तो 11 का ही लगेगा 51 से 55 साल की उम्र में। नहीं, 54 साल की उम्र थी। हाँ, तो 51 से 55 के बीच में सरला वर्मा 11 का मल्टीप्लायर लगा रही है। मेरा कहना, जब नौकरी ही आपकी 6 साल की बची थी, जी जी, तो 11 का क्या औचित्य है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सिर्फ वकील को अधिकार है 80 तक काम करने का। हाँ, और बाकी गवर्नमेंट उठा के बाहर कर देती है, क्या करें? जी, हम तो आज से 25 साल 30 साल बाद भी आपको यही वकालत करते बिल्कुल, हम तो चाहते हैं आप 100 साल तक वकालत करें। नहीं सर, 90 साल की उम्र में मैं वकालत रिटायरमेंट ले लेंगे आप? अच्छा, मैं 30 साल से ज्यादा और वकालत नहीं करूंगा। हाँ, तो ये बेचारे जूनियर्स तो हतोत्साहित हो गए, बोले 30 साल अभी आप और इंश्योरेंस कंपनी को। नहीं, आई थिंक अप टू 92 इट इज ऑल राइट। टुडे आई एम 62, तो 92 is fine. 92 is a good age to work. सरदार राजेंद्र सिंह ने भी 96 97 में। अभी तो मैं आपके लिए 100 बोल रहा था। चलिए, अब अपील लिखा दें। अब ये अपील का मेरा निवेदन ये कि और सन्स 25 साल, तो क्या हो गया? 28 साल, दे आर हेल्ड टू बी डिपेंडेंट। You understand that loss of father is a great loss. But Whatever it, at whatever age it but an unfortunate incident cannot be made the source of enrichment. No, it is not source of enrichment. It is just compensation. The thing is, when he was not going to earn more than that, then how we can? चलिए, this appeal is filed by the insurance company being aggrieved of award dated 29, क्या डेट क्या डाली है, 29/8/2022, passed by Learned Motor Accident Claims Tribunal, Sydney, in claim case number 205/2019, अमित कुमार
and others versus Rajesh Kumar Bairagi and others on two grounds, namely, learned tribunal has erred in applying multiplier of 11, overlooking the fact that deceased was left with only 6 years of service, and therefore multiplier of 11 could not have been applied. Second ground is that two of the sons of the deceased, aged about 29 and 22 years of age, have been taken to be dependent on the deceased Purushottam Patel, and award has been passed. Full stop. Thus, on both the grounds, it is submitted that award needs to be modified and 1,20,20,000 है। 1 crore 20 lakh दिया है क्या? हाँ. एक Award needs to be modified. yes. It is also submitted that tribunal has arbitrarily added 15% towards future prospects, which also needs to be modified. Next para. Learned counsel for the claimants and the claimant के लिए कौन है? Mine. I am for the R1. For Shri Bhupesh Kumar R4 and R5 mine. and R4, R5 itna supports the award. Next para. After hearing learned counsel for the insurance company, though the arguments may sound very attractive, but the fact of the matter is that principles of law have been crystallized by Honorable Supreme Court in case of Sarla Verma and Pranay Sethi. Full stop. Law laid down by Supreme Court prescribes multiplier of 11 for a person in case the deceased or the injured is of the age of 51 to 55 years. Full stop. Admittedly, there is no dispute as to the age of the deceased to be between 51 to 55 years. Therefore, first submission that since he was left with only 6 years for retirement and therefore multiplier of 11 cannot be applied is not made out. हाँ कुछ लाए क्या? Split multiplier applicated by हैं? split multiplier हाँ. identical as this is case 54 हाँ. almost right. ये आपने बता दिया इन लोगों को कि 30 साल आप गलत और करेंगे तो इन्होंने इनसिक्योरिटी से मुझे जजमेंट बताना चालू कर दिया. आप कहते कि आप 65 में रिटायरमेंट ले लेंगे तो ये बच्चे कितने खुश हो जाते हैं कि इनको सारी मैं इंश्योरेंस क्यों कंपनियां मिल लूं? जाएंगी. क्या सवेरे उठ के अब कमाने की कोई जरूरत नहीं सर, पर करूं क्या? हाँ ठीक बात. आई एम फाइटिंग फिट. ठीक है. I never climb the stairs of the High Court slowly. दौड़ के ही चढ़ता हूँ नहीं सर. बहुत अच्छी बात है. आप ऐसे ही दौड़ के चढ़ते रहे 92 तक. लिखिएगा. In this regard, judgment of Honorable Supreme Court in R. Valli and others versus Tamil Nadu State Transport Corporation Limited 2022 का 5 SCC 107 is relevant where Honorable Supreme Court has deprecated the practice of applying split multiplier. Therefore, the first issue raised by learned counsel for the insurance company finds answer in the judgment of Supreme Court in R. Valli and others. Full stop. And accordingly, it is answered in negative. Next paragraph. As far as second question is concerned, comma, dependency, the tribunal has deducted 1/3 of the amount towards the living expenses of the deceased, taking 3 dependents on the family. Full stop. As long as disease was not a bachelor, 1/3 deduction is the norm. Full stop. As 1/3 deduction is the norm as laid down by Supreme Court in Sarla Verma. Therefore, deduction would have been the same, that is 1/3 towards the living expenses of the deceased. Full stop. Only difference which has been made is award of rupees 44,000 each to each of the sons under the head of loss of parental consortium. Full stop. That amount is also reconciled in terms of the 3-bench judgment of the Supreme Court in case of Satinder Kaur. Therefore, none of the grounds raised by the learned counsel for the insurance company are made out to assail the impugned award. Appeal consequentially fails and is dismissed. My lord, kindly allow my condonation. हाँ, delay condonation ऊपर allow कर देना. Delay is condoned. Like, हाँ? अभी रुक जाओ, देंगे 96.
Correct. 199. Where people